Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and today we are going to cover the speaking topic. And basically, I would like to tell you a few things about speaking as well, which are very, very important. So, first of all, let me introduce you to the speaking task, which we have already covered so many times. But as there would be new YouTube followers, as well as there would be new students coming for the professional coaching from Dr. BKM Institutes. So for all of them, first of all, in the OET speaking, you will get two role plays in the exam. So that is what you need to consider. Each role play, you will get 3 minutes to prepare and 5 minutes to speak. So basically you have to cover the role play in 5 minutes. 5 minutes mean at the end of the task, you must say, I reassure you that you will be fine. Reassurance is very important. It has very special marks. Reassurance can be in different ways. You can also say, I would like to highlight the key points. Or you can say, I'm giving you a leaflet which contains all the information which we have discussed. I'm giving you a leaflet which contains all the information in written form. So basically written form mein it contains all the information. So basically that is what majorly speaking is all about. There would be two role plays, 3 minutes to prepare. Then you will have to speak for 5 minutes. Then again, you will get the second role play, 3 minutes preparation time, 5 minutes speaking time. So that is how the speaking will go. Reassuring is very important. You can say, I would like to highlight the key points. You can say, I'm giving you a leaflet which contains all the information in the written form. And if you still have any query, feel free to contact us. Feel free to contact us on the number given in the leaflet. So ऐसे आप टास्क को कंप्लीट करते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओईटी में. देन अब आता है प्रिपरेशन टाइम का यूज कैसे करना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. 3 minutes प्रिपरेशन टाइम. So 3 minutes preparation time means you can write anything on the paper. You can write anything on the question paper itself. मतलब question paper जो आपको मिलेगा, you will get a role play of nursing, of nurse. So you can write anything like questions like I am this, मतलब whatever you want to write. What is the whatever difficult part is. So वो मैं आपको भी example में show करूँगा how to write this role play and how to prepare. So आप कुछ भी लिख सकते हो. There are no marks for facial gestures. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन ओईटी. फेशियल जेस्चर्स हैव नो मार्क्स बेसिकली इंप्लाइज दैट आप रोल प्ले में देख के बोल सकते हो. जैसे अभी हम रोल प्ले करेंगे, आपको मैं दिख नहीं रहा, यू कांट सी मी. दैट इज व्हाई आई टीच लाइक दिस. क्योंकि ओईटी स्पीकिंग में वीडियो का कोई मार्क्स नहीं होता. देयर इज नो मार्क्स फॉर द फेशियल जेस्चर्स. सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसके बेस पे, रिकॉर्डिंग के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं. सो ऑडियो रिकॉर्डिंग बेस्ड मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो आपकी वॉइस, आपकी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, आपकी टोन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. ये बहुत जरूरी है. आप कैसा बोलते हो, जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हो, यू कैन रियली फिगर आउट कि मैं कॉन्फिडेंट हूं या नहीं हूं, या मैं नर्वस हूं या नहीं हूं, मेरी वॉइस में कितनी हेजिटेशन है. सो यू कैन ऑल जज. सो माई वॉइस शुड बी वेरी फर्म एंड इट इज ऑल अबाउट वॉइस. तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के ही सारे मार्क्स हैं. और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ओईटी स्पीकिंग को शॉर्ट पास करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, द एग्जामिनर is not examiner because he does not have any marks. Examiner is just your patient. अगर आप ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है. अगर आप एग्जामिनर को स्पीकिंग दे रहे हो, उसके हाथ में मार्क्स हैं, तो आपको डर लगेगा. यू विल हैव सर्टेन फियर फॉर एग्जामिनर. बट if you are handling a patient, then it is very easy. Then you automatically become much better. तो आपको सिर्फ एक पेशेंट को हैंडल करना है. दैट इज द जॉब. So again, talking about OET speaking, you will have two role plays.
वार्म अप राउंड होगा। वार्म अप राउंड की बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि कोई मार्क्स नहीं होता। वार्म अप राउंड सिर्फ आपको कंफर्टेबल करने के लिए होता है। उसके पास हमारी अलग से वीडियो है, यू कैन वॉच आउट आवर वीडियोस फॉर द वार्म अप ओईटी क्वेश्चंस, तो उसकी वीडियो है, बट अगेन इट डज नॉट हैव एनी मार्क्स। वार्म अप के बाद आपको रोल प्ले देंगे, 3 मिनट्स टू प्रिपेयर, 5 मिनट्स टू स्पीक। इन 5 मिनट्स में आपको रीएश्योर जरूर करना है। अगर बाय चांस आपका टाइम खत्म होने वाला है और एग्जामिनर आपको कोई इशारा करता है कि आपका टाइम खत्म होने वाला है, तो ऐसे ही कहो, so I would like to reassure you that there is nothing to worry and you will be fine soon. बस इतना सा बोल दो, I would like to reassure you there is nothing to worry and you will be fine soon. ये बोल दोगे तो भी आपकी रीएश्योरेंस पूरी हो जाती है। लेकिन ऐसा ना हो कि एंड स्टेज कैंसर पेशेंट और आपको यू विल बी फाइन सून, तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू द टास्क, बट इन मेजर टास्क दिस कैन वर्क आउट. So this is all about OET speaking. Now I will take all these points and we will do one of the role plays of OET speaking so that you can understand in a very nice way, and I'm just going to take you to that particular speaking. So today we have this role play. आपको ऐसा रोल प्ले आएगा. So आपकी हॉस्पिटल की सेटिंग है आज. This patient was brought, passive voice, that is what I say. एक्टिव पैसिव का आपको पता होना चाहिए. अगर आपकी एक्टिव पैसिव पे कमांड है तो आपको अच्छे से रोल प्ले. दिस पेशेंट वॉज ब्रोट मतलब किसी के द्वारा इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ योर हॉस्पिटल. तो आपके हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस पेशेंट को लेके आया है कोई. लास्ट नाइट सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट एजमा अटैक. जैसे मैं आपको राइटिंग के टाइम सिखाता हूँ कि देखिए वॉज प्लस पैसिव वॉइस, मतलब कि ये पेशेंट इस हालत में था कि वो अपने आप नहीं आ सकता था, उसको किसी के द्वारा लाया गया. सो दिस पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड विथ एक्यूट एजमा अटैक. ही इज करंटली बीइंग हेल्ड फॉर ऑब्जर्वेशन. अभी आपके पास ठीक हो चुका है, ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास रुका हुआ है. द पेशेंट हैज हैड अ फ्राइट. फ्राइट का मतलब बहुत ज्यादा डर गया था. एंड इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज और हर कंडीशन. तो अब आपका पेशेंट बड़ा कंसर्न्ड है कंडीशन को लेके. तो आपको पहला रोल प्ले क्या करना है, फाइंड आउट हाउ द पेशेंट इज फीलिंग इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एजमा. अगर ये पॉइंट नहीं भी दिया होता तब भी ऐसे रोल प्ले में जब पेशेंट आपके पास एडमिट होता है, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ आपको बोलना गुड मॉर्निंग, माय नेम इज डॉक्टर बीकेएम, आई एम अ नर्स, सॉरी, देन आई हैव टू से माय नेम इज Bhupesh because I can't say doctor when I am performing as a nurse. So my name is Bhupesh. I am a nurse over here. So how are you feeling now? ये आपको करना ही है. If patient is admitted, तो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन यही है, how are you feeling now? So good morning, my name is Bhupesh. I am a nurse over here. So how are you feeling now? So patient will say, then he will explain, and you will say, so how are you feeling now? And do you have any concerns? तो जैसे ही वो फर्स्ट बात पूरी कर भी लेगा कि अगर वो बोल देता है आई एम फीलिंग बेटर नाउ बट आई एम हैविंग लॉट ऑफ फियर, तो आप पूछोगे ओके कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योर फियर्स. ओके कुड यू प्लीज टेल मी. जो पेशेंट बोलेगा उसके साथ कोऑपरेट करना है, वही बोलना है, रट्टा नहीं मारना. कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू. तो जब भी वो कहता है मेरे को फियर है, तो आप कहोगे कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू. तो पेशेंट आपको बताएगा कि एक्सप्लेन व्हाट एजमा इज, तो उसको बताना है कि कुड यू प्लीज टेल मी. बस वो बताएगा आई एम हैविंग अ फ्राइट, आई एम रियली स्केयर्ड, आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट माय कंडीशन. तो आपको सबसे पहले उसको सेव करना होता है कि डोंट वरी, यू आर आउट ऑफ डेंजर नाउ एंड देयर इज नथिंग टू वरी. यू आर आउट ऑफ डेंजर, या यू आर बेटर नाउ एंड देयर इज नथिंग टू वरी. उसको अच्छी बात बोलो, यू आर बेटर नाउ एंड देयर इज नथिंग टू वरी. तो पेशेंट कहेगा यस आई नो, आई अंडरस्टैंड नर्स, नथिंग टू वरी एट द मोमेंट, बट व्हेन दैट इंसिडेंट हैपेंड, जब वो इंसिडेंट हुआ आई गॉट स्केयर्ड. तो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द थिंग. तो आप उसको बताओगे ओके लेट मी टेल यू, you had an acute asthma attack. So first of all, I would like to explain you what is asthma. Asthma is basically a chronic disease of the airways. That means it is a disease connected with your lungs. और हम सबको पता है इसके कारण क्या होता है, इसके कारण से यू फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद यू. आपको भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुई थी, सो इट इज कनेक्टेड विद द लंग्स एंड यू फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो वो कहेगा हाँ मेरे को ब्रीदिंग की डिफिकल्टी हुई थी नर्स, आई हैड द सेम प्रॉब्लम, बट व्हाट कॉजेज इट. तो आप कहोगे ओके लेट मी एक्सप्लेन यू द कॉजेज ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज.
It can be environmental as well as it can be genetic. It can be, हो सकता है, it can be environmental or it can be genetic. That means मुश्किल वर्ड जरूरी नहीं आपको ये हेरिडिटरी डेपोजिशन बोलना है, ये मुश्किल होता है बोलना, तो इसकी बोलो सिंपल अपने वे में बोलो. इट कैन बी एनवायरमेंटल, इट कैन बी जेनेटिक. दैट मीन्स इट कैन बी ड्यू टू योर फैमिली हिस्ट्री. उसको बताओ इट कैन बी ड्यू टू योर फैमिली हिस्ट्री. That means your family member is suffering from this condition and they pass this thing to the new generation or to the next generation through genes. So that is, it can be genetic or it can be environmental, such as dust and other allergens can cause this disease. तो आपको अच्छे से बताना है. फिर आप कहोगे now I would like to tell you about the treatment. First of all, there are Ventolin inhalers. Basically, it has a drug known as salbutamol, which helps in relieving difficulty from breathing. Also, I would like to tell you how to use an inhaler. So basically, it is simply taken through mouth. So I will explain you everything later on. So prognosis for asthma patient is normally good. It is kind of a disease. It is kind of a condition that does not have a permanent cure, but the symptoms can be controlled. तो इसका permanent cure नहीं होता, लेकिन symptoms can be controlled. That means if you will do daily exercises as recommended by the doctor, and if you will have the right dietary intake, अगर आप खाना सही खाओगे, regular exercise करोगे, so then you will have less chances of reoccurrence. तो chances घट जाते हैं reoccurrence के. So that is the point regarding the asthma. So otherwise prognosis is good. There is nothing to worry. So deal with patient anxiety about the problem, emphasizing that asthma can be controlled. तो जब वो कहेगा oh my god it is a permanent condition, तो उसको बताओ but I have already told you, however I have already told you. जब भी किसी point को repeat करना है, I have already told you that there is nothing to worry. उसको बताओ उस बात को दोबारा. There is nothing to worry and its symptoms can be controlled. तो अगेन बहुत अच्छे से बोलो. इट इज ऑल अबाउट कंट्रोल्ड ऑफ वॉइस व्हेन इट कम्स टू ओईटी स्पीकिंग. तो ये आपका पूरा रोल प्ले ऐसे आप लिख सकते हो पेपर में. और देखो अभी तक हमने जो भी इंटरेक्शन, वट एवर इंटरेक्शन वी हैव डन, यू कैन राइट ऑल दीज थिंग इन द एग्जाम. वट एवर वी हैव डन इंटरेक्शन अंटिल नाउ, मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, ऐसे सिर्फ ऑडियो फॉर्म में जाएगा. तो मैं आपको बोल के दिखाता हूँ कैसे बोलना है. गुड मॉर्निंग, माई नेम इज भूपेश, आई एम अ नर्स ओवर हियर. सो आई वुड लाइक टू नो हाउ आर यू फीलिंग नाउ. Oh, well, nurse, I'm not feeling too good. Could you please tell me what happened? As I can see from your case note that you were presented yesterday into our emergency department last night, and at that time you were suffering from acute asthma attack. But currently you are fine, and right now you are being held here only for the observation. So there is nothing to worry, you are out of danger. Well, nurse, I do understand I am out of danger, but yesterday I felt like I would die. I could not breathe even. I'm still having the fright of it, and I'm really concerned about my condition. See, I totally understand what you mean by this, because episodes like acute asthma attack can be really disheartening, can be disturbing for a human being. So I totally understand what you mean. So I would like to explain you about this condition. May I? Yes, nurse, please. I really want to know. Of course. First of all, let me tell you what asthma is. Asthma is basically a chronic disease, is a condition in which there is kind of a blockage of the airways, and it is a chronic disease. But I would like to tell you that this particular condition has good prognosis and there is nothing to worry. But nurse, why does it happen? Okay, talking about the causes, I would like to tell you there is no specific cause of it. Asthma can be because of various reasons. First of all, there can be environmental factors, such as it can be dust, dirt particles, or it can be due to other allergens present in the environment. Other factors can be genetic. That means it can be basically passed on from the previous generation to the next generation. So if your family member had this kind of a condition in the past, then it can also be one of the reasons. But nurse, I don't have any family member. So that means it is kind of an environmental factor that you are having bit of allergy from the dust or others, and that might later on lead to acute asthmatic episodes. So you need to be careful about going to places where there is lot of dust and other things. So you have to
take care of the allergens present in the environment. Okay, nurse. So what is the treatment? Talking about the treatment, first of all, there are Ventolin inhalers which doctor has prescribed you, and I will let you know how to use inhalers. So I will tell you about how to use the inhalers later on. But yes, doctor has prescribed you inhaler, which is the best treatment for these kind of episodes. So whenever you have any acute asthma episode, then you should use the inhaler. Oh my God, nurse, that means you are saying that I can have this attack again? Well, I'm afraid to say, but yes, there are chances it can happen. But if you will follow the instructions given by the doctor, then chances are very less, because asthma is a kind of a chronic disease. So there can be episodes like this, but this inhaler will help you to relieve those episodes, as well as if you will follow doctor's instruction, like doing daily exercises and following the right diet intake, and if you do regular exercises, obviously the chances will decrease and the episodes frequency will also decrease. Okay, nurse, but I'm really getting anxious that it cannot be cured. Well, I understand what you mean by this problem, but please understand, if you will follow the instructions which I have already told you, then there is nothing to worry, as the symptoms of this particular condition can be controlled easily. Okay, nurse. So do I have to take any special measures? No, there is nothing as such. It's just I have already explained you all the things. Now I am giving you a leaflet which contains all the information what we have discussed regarding the causes, the treatment plan, how to use the inhaler. So everything is presented in this leaflet. Still, if you have any problem, please feel free to contact us on the number given below in the leaflet. Is it all good? Okay, so now I am leaving. I hope you have understood everything. Is there anything that I should repeat? Well, no, nurse, I have understood. Oh, that's great. So here is your leaflet. And also, if you need anything, the buzzer is right beside your bed. Buzzer is right beside your bed. So you can ring the buzzer and we would be here to assist you. Is that all good? Okay, nurse. Well, then great. I'm leaving now and please take care. And if you feel any difficulty, feel free to ring the buzzer. Okay, take care. Thank you. So that is how you execute your speaking role play in the best possible way. So it's just about executing in a very nice, confident manner. And it is all through your voice. As you can listen to my voice right now, that is what makes the maximum difference. So please listen to this recording 2 times, 3 times. If you really want to speak like what I have spoken, अगर आप मेरे जैसा बोलना चाहते हो तो एक बारी से नहीं, आपको 2-3 बार सुनना चाहिए. So that will give you that confidence. Lines को लिखना चाहिए. This is Dr. Bhupesh from Dr. PKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.